Cool. Now let us start solving the sets and Venn diagram questions. Do this one. Easy questions first. Refer to the data below and answer the questions that follow. ठीक है, अब बताओ क्या क्या बोला है. 5% passengers who boarded Guwahati New Delhi Rajdhani Express on 20th February 2025 do not like coffee. तो ये is a unnecessary information given to you, doesn't matter. Whole is 5% of the passengers who boarded a train do not like coffee, tea and ice cream, and 10% like all three. ठीक है, तो we have three set problem here. It's a three set problem. There's coffee, there's tea, there's ice cream, right? So we will draw a three set diagram. Coffee, tea and ice cream, right? Coffee, tea and ice cream के तीन हमने draw कर दिए. अब वो बोल रहे हैं कि 5% people who boarded the train do not like all three, right? The number of people is not given anywhere in the question. Let us assume there are 100% people, 100 people, right? So out of 100 people, we know that 5 people do not like. तो मतलब total 95 ही है जो डायग्राम में रिप्रेजेंट होंगे. If 5 do not belong to either of the three, इसका मतलब out of 100 5 हमारे गए, सिर्फ 95 ये टोटल आना चाहिए. A, B, C, D, E, F, G ये सारे सेक्शंस का टोटल 95 ही है. ठीक है, दैट इज योर फर्स्ट. It's all 95 होते. ठीक है. Now they are saying कि 10% people like all three, मतलब C की वैल्यू 10 हो गई. 10% people. C is the all three वाला section, right? Now 20% people like coffee and tea. Coffee and tea मतलब कहाँ होगा? Coffee and tea is this B plus C. So B plus C is 20. Then 25% people like ice cream and coffee. Ice cream and coffee का intersection है D plus C. That is 25. And 25% people like ice cream and tea. Ice cream and tea का combination है C and F. F and C, right? है ना? Now उन्होंने ओनली नहीं बोला है, ये ध्यान रखो. उन्होंने बोला 20% लाइक उन्होंने बोला 20% लाइक कॉफी एंड टी, राइट? तो कॉफी एंड टी अगर उनको पसंद है, ओनली कॉफी एंड टी नहीं बोला है, इसलिए हम पूरा इंटरसेक्शन लेंगे. ठीक है. उसके बाद उन्होंने बोला है आगे कि 55% पीपल लाइक कॉफी. 55% पीपल लाइक कॉफी. कॉफी मतलब कौन सा? पूरा सर्कल. तो इसका मतलब हमें पता है कि A plus B plus C plus D is entire coffee circle. This is all 55. 50% like tea. 50% is the entire circle, which is B plus C plus E plus F is all tea, right? And ice cream. Ice cream is all C plus D plus F plus G. Understood? अब इन इक्वेशंस के हिसाब से, इन इक्वेशंस को लेकर क्या हम ऑल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं? जो चाहे वो इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं. जो भी सवाल वो पूछे उस सवाल का हम आंसर दे सकते हैं. कैसे? बाय यूजिंग बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन. यहाँ से हमें क्या पता चलता है? C की वैल्यू मिल गई 10. तो यहाँ से B की वैल्यू कितनी मिल गई? B भी 10 हो गया. 20 माइनस C. यहाँ से D की वैल्यू मिल गई हमें. हाउ मच इज D? D is also 15 because C is 10. हमने सब्ट्रैक्ट किया. यहाँ से हमें पता चला F is also, राइट? नाउ अभी इस इक्वेशन में गए हम. यहाँ पे हमें B, C और D की वैल्यू पता है, राइट? हमें पता है कि B is 10. सॉरी, B is 10, C is 10 and D is 15, right? तो हमें A का आंसर मिल गया. हाउ मच इज A? 20, right? A की वैल्यू 20 मिल गई, करेक्ट? बिकॉज दिस इज 35. 55 माइनस 35. वैसे ही मुझे बताओ अभी यहाँ से क्या मिलेगा तुम्हें? A, B, C, D मिल गया. E और G मिलना है. बताओ वैल्यूज बताओ कैलकुलेट करके. हाउ मच विल बी E? हाउ मच विल बी G? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. तो E कैसे कैलकुलेट किया हमने? अगेन वी नो B की वैल्यू 10 है, C की वैल्यू 10 है और F की वैल्यू 15 है. तो इससे हमें पता चल गया E is 15. एंड द सेम गोज, C की वैल्यू 10 है, D की वैल्यू 15 है, F की वैल्यू 15 है. तो दिस बिकम्स 30, 40. तो G बन गया 10, है ना? तो हमारी ये सारी वैल्यूज आ चुकी है. ठीक है. अब इसके बेसिस पे वी कैन आंसर वॉट एवर क्वेश्चंस दैट कम टू अस. ये अच्छा, ओके, दिस स्पेस वाज लेफ्ट फॉर सॉल्विंग बट जरूरत नहीं है उसकी अभी. सो ओके, यहाँ पे द नंबर ऑफ पैसेंजर्स हु लाइक ओनली कॉफी is greater than the passengers who like only ice cream. Only coffee, only ice cream.
ठीक है, तो व्हाट इज ओनली कॉफी एंड ओनली आइसक्रीम बताओ मुझे यहाँ पे. व्हाट इज ओनली कॉफी? विच सेक्शन इज ओनली कॉफी? A. Very good. And only ice cream is G. Right? So A is greater than G by how much? A is 20 and G is 10. So by what percent it is greater? 10. 10 से बड़ा है. Correct? 10 से बड़ा है. अब what percentage is better उन्होंने पूछा है. The number of people. अच्छा. So the number of people who like only coffee is 20 and only ice cream is 10. So by what percent it is bigger? 100%, right? हमें परसेंटेज निकालना है ना? तो कैसे निकालते हैं? हाउ डू यू फाइंड? यू आर लाइक न्यू माइनस ओल्ड अपॉन किससे बड़ा है? 10. 100%. करेक्ट. करेक्ट. ये तो परसेंटेज का बेसिक एप्लीकेशन हो गया ना, तो इसलिए 100%. तो नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली कॉफी इज ग्रेटर देन people who like only ice cream by 100%. Sorry, 10 mean 100%. Fair? Understood? So 100% is your answer. Then the percentage of passengers who like both tea and ice cream but not coffee. They like both tea and ice cream but not coffee. ठीक है? Tea and ice cream but not coffee. बताओ. Tea and ice cream but not coffee. So that would be tea and ice cream is but not coffee is F. Right? So that is the section F. F is how much? F is 15. So हमारा answer is 15. Percentage of people who like tea and ice cream पूछा था but not coffee. Alright. Then उसके बाद आया third question. The percentage of passenger who like at least two of the three products. At least two. बताओ मुझे कैसे निकालेंगे हम? At least two. Very good. So at least two is basically 2 or 3. तो ये पूरा section, right? These are the people who like at least two. B, C, D and F. Add करो. At least two मतलब B plus C plus D plus F, which is in सबका addition 30, 40, 50. So there are 50 people who like at least two. Fair? So इसका total आ गया 50. So 50 is our answer. Then if the number of passengers is 180, then the number of passengers who like ice cream only. अच्छा, अभी उन्होंने passengers 180 दे दिए हैं, so they are asking कि the number of passengers who like only ice cream. So only ice cream was what? In our diagram, only ice cream was G, and G was how much? 10%, right? So 10% ले लेंगे हम. अभी हमने 100 लिया था इसलिए 10 आया. 10% ले लेंगे हम of 180, which is 18. So 18 is the answer. Are we all good in solving these questions? समझ गया ना हमको? सॉर्ट हो गया. आ गया कैसे सॉल्व करना है? फेयर, स्क्वायर, इजी ऑर्डर क्वेश्चंस. अब डिफिकल्ट ऑर्डर भी यही रहेंगे, बस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डेटा दे देंगे वो. नथिंग. ठीक है, ऐसे ही करना है हमको. लेट अस डू दिस वन नाउ. You have to draw the entire thing. Again, it is a three-side problem. There is coffee, there's tea, and there's smoking. ठीक है. By the way, I hate people who smoke, but yeah, coffee, tea, and smoking. ठीक है. So, no, मतलब I don't hate people who smoke. Please let me take back this sentence. I'm saying I hate smoking as a thing. No hate towards any person individually. Okay. Okay. In a survey among the students at all IIMs, it was found that 48% preferred coffee. अब देखो ये A, B, C, D, E, F, G. अब 48% preferred coffee का मतलब ये है, only coffee नहीं बोला है. 48% preferred coffee मतलब पूरा 48% है. 54% people like tea मतलब and 64% people smoked. ठीक है. फेयर, इसमें नो डाउट्स. फिर उसके बाद ऑफ द टोटल 28% लाइक कॉफी एंड टी. कॉफी एंड टी इज D plus C. $32 smoked and drank tea. 32 smoked and drank tea. Smoked and drank tea is C and F. Smoked and drank coffee is C plus D. Fair? Now
6% people did none of this. 6% people did none of this, मतलब सबका addition is 94%, right? Because 6% are not a part of this thing. तो 94 सबका addition है. तो हमारे पास क्या है? Basically, these are enough for us to find. क्योंकि क्या है? There are 7 variables and there are 7 equations. 7 equations, 7 variables. Definitely we can find each of the variable. हम A, B, C, D, E, F, G सबका वैल्यू निकाल सकते हैं. तो निकालो 7 equations, 7 variables. निकालो. चलो, हाउ टू बी स्मार्ट अबाउट इट. कैसे कर रहे हो? आ रहा है नहीं आ रहा है? टेल मी यस और टेल मी योर स्टक. यस नो कुछ तो बोलो बेटा. आई एम नॉट एबल टू see any message pop-ups. You am I missing something? Calculate with अरे ये 48% equals to 960 is not the matter. The matter is that you have to find each and individual value. Every individual value you need to find. How do you find it? See, let's be smart about it. Okay. So what are we going to do is we have 7 equations and 7 variables and we are going to sort it this way. अब तुम्हें A, B, C, D, A plus B plus C plus D की value क्या है? 48. So this is 48. Fair? Right? Now E and F. E and F is B. B and C we know is 28. We know B plus C is 28. So E and F will be what? नीचे लिख देती हूँ. E and F will be what? 54 minus 28. Which is 26. Right? तो हमें G की वैल्यू मिल गई ना ऐसे. मिल गई. What is G now? Tell me what is G? G is 94 minus 48 plus 26. Correct or no? Smart? बताओ जल्दी बताओ what is G की वैल्यू? 60 and 74. 74, 20. G की वैल्यू आ गई 20. Right? Now that you know G, अब मैं तुम्हें बताती हूँ. अभी G की वैल्यू पता है. G you know is 20. You know C plus D is 30. तो F की वैल्यू आ गई फिर. How much is F? यहाँ लिखूं क्या? बाजू में लिखती हूँ. How much is F? F is basically this is 50. 64 में से 50 माइनस करना पड़ेगा 40. Now that you know F, यहाँ पे you can find value of C. C is what? C will be 32 minus 14, which is how much? बताओ. 18, right? So it is 18. Yes, it is 18. अब C आ गया. C के हेल्प से D भी आ जाएगा, B भी आ जाएगा. करेक्ट? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. D कितना आया? अभी 10. D कितना आया? 12. तो इस तरीके से हमारी वैल्यूज आ चुकी है ना. G हमारा आ चुका है. अब बाकी निकालना है. क्या क्या निकालना है? A, B, C, D है. E, F, G दो ही निकालने बाकी. A एंड E जो हम ऊपर निकाल लेते हैं फटाफट. इससे हमारा A कितना आएगा? A मैं इधर ही डालूंगी इस इक्वेशन में. B प्लस C इज 28. अच्छा 30, 40. 40 तो ये आ गया 8. एंड E इज हाउ मच? E और F हमें पता था 26 है. F 14 है तो E आ गया 12. ठीक है. तो इस तरीके से हमारे सारे सेक्शंस की वैल्यू आ गई. अब कुछ भी पूछो, अब कुछ भी पूछो, अब हमें आंसर आ जाएगा. यहां तक निकालना जरूरी था. अब उसके बाद दे आर आस्किंग अस समथिंग. दे आर आस्किंग द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who like only coffee to who like only tea. Only coffee to only tea हमें रेशियो निकालना है. How do we find out only coffee to only tea? Only coffee is how much? A. Only tea is how much? E. A by E. अब ये परसेंटेज ऑफ 2000 ही है. सब कुछ इस परसेंटेज ऑफ 2000 ओनली. तो इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट. हमको एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है. हम परसेंटेज का ही रेशियो ले सकते हैं बिकॉज सब कुछ परसेंटेज ऑफ 2000 है. तो दिस इज 8 by 12 which is 2 by 3. 4 2s are 4 3s are 2 is to 3. That is your answer. Next is the number of students who like coffee and smoking but not tea. Coffee and smoking but not tea. So coffee and smoking but not tea is what? Coffee and smoking is C plus D but not tea. तो C में सिर्फ D चाहिए, right? तो D की वैल्यू कितनी है अपनी? What is the value of D? D is 12. D is 12. So what is that?
we have what 12% of 2000, which is 240, right? So it's 240 people. Fair? चलो अभी ये सॉल्व करो बाकी क्वेश्चंस. कैसे निकालना है इसका आंसर? क्या है थर्ड का? तो परसेंटेज ऑफ दोज हु लाइक कॉफी और टी बोला है, एंड नहीं बोला है यहाँ पे, और बोला है. और मतलब यूनियन, यू आर गोइंग टू टेक बोथ. मतलब सोलो कॉफी सोलो टी भी आएगा. अगर कॉफी एंड टी बोला तो सिर्फ इंटरसेक्शन आएगा, बट और जब बोला है तो देन इट इज यूनियन ऑल्सो. तो ये याद रखो कि और इज यूनियन एंड इज इंटरसेक्शन. ठीक है. Or is union and is intersection. So they are asking the percentage of those who like coffee or tea but not smoking among those who like at least one of these. अच्छा, at least one of these मतलब पूरा ही टेबल हो. एटलीस्ट वन ऑफ दिस मतलब 1 2 या 3, मतलब पूरे ही वेन डायग्राम की बात हो गई. ठीक है. तो you want to find percentage of people who like coffee or tea but not smoking. Coffee or tea but not smoking is where coffee or tea but not smoking is this. तो इट्स ए बी एंड ई. स्मोकिंग हटा के ए बी एंड ई. ए बी एंड ई का एडिशन कितना है? ए इज 8, बी इज 10, ई इज 12. तो दिस इज 20 30. तो 30 टोटल आंसर आया. सो वी हैव 30% पीपल. 30% पीपल, राइट. सो उन्होंने ये पूछा है तुमको यहाँ पे कि अभी देखो, ध्यान दो सवाल पे, ध्यान दो. द परसेंटेज ऑफ पीपल हु लाइक दिस इज 30% among those who like at least one. But this is 30% of 100%. हमें 100% का नहीं पूछा उन्होंने. Of the people who like one of these, how many people who like one of these? We had 94% people who like one of these, right? तो वो बोल रहे हैं कि out of the people who like one of these, out of these 94, what percentage of people end up liking the given condition? ये है तुम्हारा सवाल. They are not asking you कि out of total people that exist, they are asking out of the total who like at least one. ठीक है. सो ये इसका आंसर को निकालने तुम्हें बोल रहे हैं. एंड उसकी वैल्यूज देखो उन्होंने कैसे दी है. मोर देन 30, लेस देन 30, लेस देन 25. अब ये हमें पता है कि 30/100 इज इक्वल टू 30. अब तुमने डिनोमिनेटर कम कर दिया, 100 से 94 हो गया डिनोमिनेटर. तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 30 आएगा. यस, दिस वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 30. तो मोर देन 30 इज योर आंसर. तुम्हें एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत भी नहीं है. सिंपल सी बात है कि 30/100 इज 30%. It is 30%. The moment I reduce my denominator, my fraction is going to increase, and that is why it is going to be more than 30%. Fair? Give me thumbs up if you have understood this question. Yes? Clarity? Very good. Chalo, fourth karo. The percentage of those who like at least one of these. Overall percentage of people who like at least one of these is 94 ना. At least one of these is 94. ये तो पता चल गया कि 6% doesn't like anything. तो other 94% like one of these. At least one या 2 या 3. तो 94 is the answer. फिर फिफ्थ क्या है? The two items having the ratio 1:2 are. बताओ. I hope you have drawn. ये तुमने ड्रॉ कर लिया है ना अपने इसमें. नहीं किया तो मैं फिर से इधर कर लेती हूँ ताकि I can refer to it. I can't keep. है ना. अब करते हैं क्वेश्चन आंसर. क्या बोला उन्होंने? The two items having the ratio 1:2 are. Which are the two items having the ratio 1:2? देखते हैं. First is E, T only. T only is what? E by E. E. And T and smoking only. T and smoking only वाले कौन से हैं? T and smoking only is F. E is to F बोल रहे हैं वो. E कितना है? F कितना है? This is not 1:2. Coffee and smoking only, T only. Coffee and smoking only is what? Coffee and smoking only is D, right? Coffee and smoking only is D. Fair? D is to T only is what? E. D is to E बोल रहे हैं. D is to E 1:2 रेशियो है क्या? नहीं, राइट. फिर नेक्स्ट
1:2 रेशियो सिर्फ इन दोनों का ही है पॉसिबल, बी और जी का, और कहीं पे पॉसिबल नहीं। कॉफी एंड टी बट नॉट स्मोकिंग, विच इज बी। स्मोकिंग बट नॉट कॉफी एंड टी, मतलब जी। तो बी और जी का ही रेशियो है, तो सी इज योर आंसर। फिर एनी कंफ्यूजन और आर यू गेटिंग इट? है ना ये? बी और जी का आंसर है। तो इसके बाद द नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक कॉफी एंड स्मोकिंग। देखो एंड है, एंड में इंटरसेक्शन लेते ना हम। तो नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक कॉफी एंड स्मोकिंग ओनली, कॉफी एंड स्मोकिंग ओनली, अगेन कॉफी स्मोकिंग ओनली, दोनों को ओनली इज डी बेसिकली, डी। एंड द नंबर हु लाइक टी ओनली इज अगेन ई, राइट? डी इज टू ई क्या है? 1:1। Fair. Very good. Very good. Last percentage of those who like tea and smoking, but not coffee. Tea and smoking, but not coffee is again F. F is 14. Done. This is how we ended up finding the answer. Fair. It's fun to solve because it's sort of logical वो होता है ना उसमें, तो it's fun to solve, to spot these things, right? चलो, good. Do this one now. मैं क्या कह रही हूँ? Will you be able to do this by yourself? I think you should be able to do this by yourself because again it is three things. There's archery, there's horse riding, there's sword fighting. There are these three things, right? And there are total these many trainees and conditions दी गई है. तो again it is a three-set problem. So three-set problem is solvable. अगर ये तुमसे नहीं हुआ तो डाउट क्लास में आई टेक इट अप. ठीक है? यहाँ पे ये कुछ काम का नहीं है as such. ठीक है? ये तो context information है. But basically it's a three-set problem: archery, horse riding, sword fighting. And there are total number of people. Again the same thing. This is the information that is given to you. You are going to solve. It's pretty straightforward and easy. अगर नहीं आया तो डाउट क्लास में भी take it up. All right, cool. Let us move ahead and do other. Great. A group of friends were discussing how they spent a weekend. Some of them went camping while others stayed at home. All the friends who went camping participated in at least one of the two activities. All the friends who stayed at home participated in at least one of the two activities. Okay. Let us do this one. Okay. So this is where there are two. ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट क्यों हो जाता है क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, यहाँ पे तुम्हारे पास दो अलग अलग सेट्स बन रहे हैं, दो अलग अलग ग्रुप्स हैं. जैसे हमारा लॉन्ग हेयर शॉर्ट हेयर था और बॉयज एंड गर्ल्स था, समथिंग ऑन दोस लाइंस. यहाँ बोल रहे हैं ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स आर डिस्कसिंग हाउ दे स्पेंड द वीकेंड. सम ऑफ देम वेंट कैंपिंग व्हाइल अदर्स स्टेड एट होम. All the friends who went camping participated in at least one of the two activities, playing cards and trekking. ठीक है? So there is one camping group. Let us see how can we visualize this. ठीक है? There's a camping group, right? And there's a people who stayed at home group. ठीक है? अब camping में भी there are two things. There are cards or trekking. And यहाँ पे there's cards and movies. Right? So cards is a common thing. है ना? अब the following information is known about the number of friends who participated in each activity. What do we know? So you do realize there's camping, there's people at home, and there are people who played cards or trekked or saw movies. ठीक है? तो अभी इसको इमेजिन करने के मल्टीपल तरीके हैं. Either you make a three-set thing of cards, trek, and movies. You know all the people who went for trek went for camping. You know people who played cards are either camping or home, and you know all the people who played who watched movies are at home. है ना? Either that or you form two different scenarios, camping अलग से, home अलग से, and then you represent camping cards and trek one thing and cards and movies another thing. कोई point is whichever way you end up representing it, हमको ये देखना है कि information किस तरीके से दी गई है. This is the way information is given. We are going to process. How are we going to imagine it? ठीक है? So the number of friends who went for a trek was twice the total number of persons who participated in exactly two activities. ठीक है? Okay. So, okay, cool. All right. So we have, let's say people. अभी ना हम instead of drawing the diagram, let us represent this one thing. कि people who went camping, है ना, and played cards is represented by A. People who went camping and did trekking represented by B.
People who were at home and played cards were represented as C. People who were at home and went to movies is represented by D. Let us simply imagine it like this. ठीक है? अब वो बोल रहे the number of friends who went for a trek. How many people went for a trek? B is equal to. अच्छा, by the way, इसमें और आएगा. Wait. We will have to also represent people who ended up doing both. है ना? कैंपिंग में बोथ एक्टिविटीज करने वाले भी लोग हैं. Who did cards, trek and both. तो वो लेट्स से E है, या इसी को हम let me write from scratch. There are people who did camping, people who were at home. है ना? कैंपिंग में you played only cards, or you did only trek, or you did both. When you were at home, you played only cards, only movie, or you did both. ये 3 कैटेगरीज बन रही है for each of these things. Correct. अब इसमें वो because they are saying that whoever did all the friends who stayed home participated at least one of the two. मतलब एक तो दोनों में से एक किया या दोनों किया. Same यहाँ पे at least one of the two. इसलिए मैंने both वाला condition डाला है. So let's say this is A, B, C and this is D, E, F. Now we can start solving. First says the number of friends who went for trek. Who went for trek? Only trek नहीं बोला है. तो trek is basically B plus C, right? ट्रैक में सब कुछ आएगा. कार्ड्स और ट्रैक में, ट्रैक के केस में सब कुछ आएगा. ये ए है, ये बी है, ये सी है. तो बी एंड सी बोथ विल कम इन ट्रैक. सो पीपल हु वेंट फॉर ट्रैक वाज twice the total number of people who participated in exactly two activities among the entire group of friends. Who are the number of people who participated in exactly two activities? बताओ मुझे. ये होम का भी कार्ड्स एंड मूवीज, डी, ई एंड एफ. दो अलग अलग पेन डायग्राम्स है. बताओ. पीपल हु डिड एग्जैक्टली टू एक्टिविटीज, वेरी गुड. इट्स सी एंड एफ. एग्जैक्टली टू एक्टिविटीज करने वाले लोग हैं सी एंड एफ. सी ने भी दोनों एक्टिविटीज करी है, एफ ने भी. हम द एंटायर से ट्वाइस है. ठीक है. सेकंड इक्वेशन बोलता है द नंबर ऑफ फ्रेंड्स हु प्लेड कार्ड्स among those, the number of friends who played cards among those who went camping. Who played cards among those who went camping is A plus C, right? It is A plus C. So number of friends who played card among those who went camping was 11 less than the number of friends who watched movies. Who all watched movies? E and F, right? Minus 11. E and F minus 11 becomes A plus C. ठीक है. Because उन्होंने only movies नहीं बोला है या only cards नहीं बोला है. ठीक है. उसके बाद third says the total number of friends who played cards among the entire group of friends. The total number of friends who played cards. कितने लोग played cards? A plus B plus D plus A plus B, A plus C plus D plus F. These are all the people who played cards, right? Among the group of friends was 20 more than number of friends who went for trek. Trek के लिए कौन गया? B plus C. Fair. Fourth is the sum of the number of friends who played cards among the entire group of friends. The sum of number of friends who played cards among the entire group of friends. So how many played cards? A plus C played cards. These are the one who played cards. The sum of the number of friends who played cards among the entire group. So this is cards. Uska sum with what? Number of friends who watched movies. Who watched movies? E plus F watched movies. Right? Was 94. इसका सम 94 है. राइट. तो जो भी कार्ड्स खेले हैं और मूवी देखा है उन सबका सम. ठीक है. तो मतलब बेसिकली पीपल, सम ऑफ नंबर ऑफ फ्रेंड्स हु प्लेड कार्ड्स अमंग द एंटायर ग्रुप, दैट इज कार्ड्स, दिस plus this is the people who played cards, and the movies, everything is 94. Okay. And fifth says, उन्होंने ये नहीं बोला ना, मतलब whole point is do we have to take this F twice is the thing, right? But the whole point is they are saying the sum of number of friends who played cards. The number of friends who played cards is one thing and those who watched movies is another thing. उनका सम उन्होंने 94 बोला है. So basically are they trying to tell us that the people who only trekked is total minus 94.
टोटल दिया ही नहीं है क्या, है ना? तो इसका मतलब somewhere probably they're trying to tell us that the people who trekked was total minus 94, है ना? And then last they are saying the total number of friends who participated in exactly two activities. The total number of friends who participated in exactly two activities, the C and F, is equal to, अच्छा, was 22, which was 4 less than the number of friends who participated only trekking. Only trekking कितना है? B is 26. B is 26 because 4 less than ना, मतलब B was 24. तो ये हमें इतने इक्वेशंस मिल गए, ठीक है? These are the number of equations we have. How many variables? There are total 6 variables, but equations we have, equations also we have 6. So there are total 6 equations and 6 variables. So definitely you should be able to find all the values. How do you end up finding the values? Straightforward. You know B is 26. You know C plus F is 22. तो यहाँ से C directly आ जाता है, फिर C एक बार आ गया तो F भी आ जाता है, right? So that way you know C, B, C and F. फिर वहां से और कहाँ जा सकते हैं हम? B, C you know, F you know, C you know. So you can find A plus D from here. That A plus D you can insert here. C you know, F you know, F you know. So you can find E. Once you know E, you can also find A. Right? और फिर सारे वेरिएबल्स आ गए, करेक्ट? तो इस तरीके से तुमको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को. And once you solve this question, you will be in a position to answer all these questions as well. So I will want to give you this as well as a homework. We will have one more class on sets जहाँ पे हम ये एडवांस लेवल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. But you end up solving the entire PDF and we will solve these questions further. Did you understand how did we do this? We just have to make sure that the number of equations have to be equal to number of variables. Baaki it is all about smartly solving.